It's a bright and sunny day here in Australia. The temperature is in the normal range for this time of year and there's a nice breeze all along the way. Oh my God! We have a strong blizzard. The blizzard's intense winds of 90 kilometres per hour are causing havoc across New South Wales and snow is falling in South Australia and Victoria as conditions worsen. The snow is unwelcome with the sudden cold spell. Mount Hotham recorded Victoria's lowest temperature of minus 5.7 degrees Celsius. There's heavy traffic everywhere. New South Wales Police have appealed for all drivers to take care on the road as thousands of families return home after the school holidays. The warning calls for people to avoid any risky behaviour. Snow flourishes are being reported in Pakenham, Alinda, Long, Ballarat and the Otways. God save us. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war. I look up the sky. I saw the beautiful silver airplane and the white long tail and the blue sky. It looks beautiful. And at the same time I saw जे ओपनहाइमर इस पूरे प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर बॉम्ब की शक्ति को देखकर खुद डर गए। भगवत गीता का एग्जाम्पल कोट करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हजारों भुजाओं वाला रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मैंने दुनिया को खत्म करने का रूप धारण कर लिया है। जब इस बॉम्ब की वारदात को अंजाम देना था तब जे ओपनहाइमर के दिमाग में भगवत गीता का यही दृश्य चल रहा था। हिरोशिमा में सुबह के करीब 8:15 पर लिटिल बॉय बम 600 मीटर ऊपर से गिराया गया था। करीब 80,000 लोग परमाणु बम गिरने के बाद तुरंत मारे गए। इसमें 90% डॉक्टरों और 93% नर्सें शामिल थी। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन था। नागासाकी में परमाणु बम से 80,000 लोग मारे गए थे। इस बम के जरिए जमीनी स्तर पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पहुंची थी, जो कि स्टील को पिघलाने के लिए काफी होती है।